Good morning, students. We were discussing about the starting of induction motor, and in the previous lecture we have discussed about the starting of induction motor using DOL starter. So today we will be discussing about the starting of induction motor using star delta or auto transformer starters. Okay, so let's start. Star delta starter. This is a very common type of starter and is extensively used as compared to all other starters. बाकी सभी स्टार्टर्स की कंपैरिजन में हम इसको यूज़ करेंगे. ओके, मोस्टली you will find star delta starters. A star delta starter is used for cage motors, and what it means, squirrel cage induction motors, which are designed to run normally on delta connected stator winding, right? Which is designed to run normally on delta connected stator winding. All right, and this type of starter is generally used from 5 to 15 HP induction motors, three-phase induction motors having rating of 5 to 15 HP rating, right? So let us, before discussing the star delta starter, let us discuss some terminologies. So let us discuss if we have a winding, right? And let me mark its one end by one, number one digit, and number two by second end. Let the number one marked is starting end of the winding and number two is the finishing end of the winding. Then if I want to make a star connection out of three phases, how will I make it? By connecting all the similar ends of the three windings. Either you connect all the finishing ends of the three windings, or you connect all the three starting ends of the windings. Then the resultant connection will be star connection. Or if you want to have a delta connection, तो delta connection में क्या करते हैं? By connecting all the dissimilar ends. मतलब फर्स्ट का स्टार्टिंग, सेकंड का फिनिशिंग, राइट? सेकंड वाइंडिंग का स्टार्टिंग, थर्ड का फिनिशिंग एंड, थर्ड का स्टार्टिंग एंड, फोर्थ का फिनिशिंग एंड, राइट? तो इस तरह से हम लोग जो कनेक्शंस है वो कर सकते हैं. ठीक है, वाइंडिंग्स को हम स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ कमिंग डाउन टू योर main topic, right? Star delta starter. Now the figure shows the connections of a three-phase induction motor with star delta starter, right? This is your, then if we have three windings, these A winding, B winding and C winding having A1 A2 B1 B2 and C1 C2 ends respectively, then first of all हम लोग क्या करेंगे, जो इनके स्टार्टिंग एंड्स हैं उनको इनकमिंग फेजेस के साथ कनेक्ट कर देंगे. A1 will be connected with incoming A1, right? B1 will be connected with incoming B1 and C1 will be connected with incoming C1, right? Hope this is clear. Now there we have, now we have three finishing ends of the three windings. And which are these finishing ends which are left? We are left with A2, B2 and C2. All right, so here we will draw one switch S which could be shifted from start position to the run position, right? In the start position you will short all the three phases together, and in the center, how we are going to connect in the center? So this is your star connection. The motor will be connected initially in star, right? At the start the handle will be at start position and the motor will be connected in star connection, right? After the motor picks up your 80% of speed, nearly 80% of the speed, this handle will be shifted to the run position, and at the run position your handle should be in such a way that it connects the windings in delta mode, right? So in delta mode what will happen, your A1 should be connected with B2, right? So your B2 which is free here, it should be connected to which terminal? B2 should be connected to or suppose
B2 should be connected to A1, right? So B2 will be connected, if you trace it, it will be connected to here A1, which is the incoming phase, right? B2 is connected to A1, right? B2 is connected from this point to this point, एंड ये कौन सा फेज आ रहा है ऊपर से, किसके साथ कनेक्टेड है, A1 के साथ. सो B2 is connected to A1. First connection justified, right? Now second one, look at the second one. What is the second connection? Your B1 should be connected to C2, right? Sorry, A1 is connected to B2, all right. Then B1 is connected to C2, right, okay. B1 is connected to C2. So here it is C2, which is free end. It will be connected to B1. So C2 को आप ट्रेस करोगे, then you will find it is connected here. और ये कौन सा इनकमिंग फेज है, B1, ठीक है. तो B1 is connected with C2 here. So second connection is also justified. So your C2 is connected to B1. Second connection is also justified here, right? Okay. Then what about the third connection? In the third connection, what you have is your C1 is connected to A2. So look at A2. A2 is here and A2 is here. A2 is connected to C1, right? So in this way you can connect all these three terminologies, three connections, and you will easily draw the diagram of star delta starter, right? Now what about the working of this star delta starter? When the switch S is in the start position, okay, when the switch S is in the start position, right? तो start position में क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग हमारी स्टार में कनेक्ट हो जाएगी, राइट, एज शोन इन द फिगर बी. दिस इज योर फिगर ए, दिस इज फिगर बी, दिस इज फिगर सी, राइट. तो स्टार कनेक्शन हमारे हो जाएंगे. देन व्हेन द मोटर पिक्स अप द 80% ऑफ द स्पीड, ठीक है, स्विच एस को हम क्या करेंगे, इट शुड बी कनेक्टेड इमीडिएटली टू द रन पोजिशन, जिसकी वजह से जो हमारी वाइंडिंग्स है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएंगी, एज शोन इन फिगर बी. ओके. देन बाय कनेक्टिंग द स्टेटर वाइंडिंग्स फर्स्ट इन स्टार एंड देन इन डेल्टा, इससे क्या होगा, हमारा जो लाइन करंट है वो स्टार्टिंग में रिड्यूस हो जाएगा टू 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू इफ द वाइंडिंग्स हैव बीन कनेक्टेड इन डेल्टा, राइट, एट स्टार्टिंग. तो जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ इट्स रेटेड करंट विच वुड बी इन डेल्टा, ठीक है. या आई स्टार भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. यू कैन राइट दैट starting I star is equal to 1/3 of I delta. Okay, you can write anything. स्टार्टिंग करंट आपका 1/3 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. और क्या होगा, और हमें पता है कि स्टार्टिंग जो हमारा टॉर्क है दैट इज स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के बराबर रहता है, ठीक है. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E20 स्क्वायर, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है. तो अब इनिशियली हमारे पास अगर हम एक फेज़ की बात करें तो वाइंडिंग हमारी स्टार में कनेक्टेड है, तो फेज़ वैल्यू वोल्टेज की क्या हो जाएगी, VL/√3. और क्योंकि टॉर्क आपका स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल है, टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज की, सो इसका स्क्वायर मतलब जो टॉर्क है वो भी आपका 1/3 हो जाएगा, बिकॉज E20 की जगह क्या आएगा, VL/√3 होल स्क्वायर. और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, VL² by 3,
क्या पता चल रहा है कि इनिशियल में टॉर्क था E20 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, अब किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, VL²/3। ठीक है, तो वोल्टेज का तो स्क्वायर ऑलरेडी है ही है यहाँ पे, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 3 आ गया है। दैट मीन्स कि टॉर्क अब क्या हो गया है, 1/3 रिड्यूस हो चुका है, राइट। ओके, so the torque has been reduced to 1/3. Since the torque developed by the induction motor is proportional to square of the applied voltage, ठीक है, so the star delta starting reduces the starting torque to 1/3 that obtainable by the direct delta starting, right. So I hope this is clear to you. This was all about your star delta starter. Now the second topic of today's discussion is your auto transformer starter. ये आप लोगों ने लैब में यूज़ भी किया है। हमने लास्ट टाइम जो इंडक्शन मोटर थी आपकी, उसको ऑटो ट्रांसफार्मर या वेरिएक, 3 फेज वेरिएक के थ्रू हमने उसको स्टार्ट किया था, राइट। सो एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इज सूटेबल फॉर बोथ स्टार और डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स। किसी भी तरह की 3 फेज मोटर हो, चाहे स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, स्टेटर वाइंडिंग आपकी, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर स्टार्टिंग। This method is suitable for starting, right. Now in this method the starting current is limited by using a 3-phase auto transformer, which eventually reduces the stator applied voltage. Okay, this is the circuit diagram for your auto transformer starter. These are the 3 windings of the auto transformer, 3-phase auto transformer, and you have the handle. ये सारे के सारे DPST स्विचेस हैं, और ये हैंडल है आपका, एक स्टार्ट पोजीशन है हमारे पास और एक रन पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 फेज मोटर कनेक्टेड है। दिस इज योर 3 फेज सप्लाई। ओके, सो लेट अस सी दिस फिगर नाउ। सो यहाँ पर क्या है, हमने एक पर्टिकुलर टैपिंग ली हुई है हर एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से, राइट। और DPST स्विच के एक टर्मिनल को हमने इनकमिंग 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया है। इफ यू सी एवरी second terminal here, this is connected to incoming 3 phase supply. Okay, so now, और जो दूसरा यहाँ पे टर्मिनल है DPST स्विच का, every first terminal that is has been connected with the 3 phase motor. Okay, एक सप्लाई के साथ कनेक्टेड है और एक आपका सीधा मोटर के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो व्हाट हैपन्स इनिशियली, जब हम लोग क्या करेंगे, हैंडल को स्टार्ट की पोजीशन पे पुश करेंगे तो क्या होगा, 3 फेज जो करंट है वो कहाँ से फ्लो करेगा, it will flow from here. Suppose these are R, Y and B. So R से फ्लो करना शुरू करेगा, it will come down to this point. जब ये पॉइंट क्लोज होगा यहाँ से फ्लो करेगा। अब और ट्रांसफार्मर की जो अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हैज़ बीन कनेक्टेड अक्रॉस दी 3 फेज लाइन वोल्टेज। ओके, जबकि जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी से हमने टैप लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से R से फेज करंट आएगा, इट विल फ्लो टू दिस वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी में फ्लो करेगा, फिर इस टैपिंग के थ्रू सेकेंडरी में पास करेगा, एंड जितनी हमने सेकेंडरी की टैपिंग ली होगी उतनी ही वोल्टेज हमारी इस पॉइंट के थ्रू जो है वो मोटर के अक्रॉस एक्ट करेगी। ओके, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। Suppose you have R, Y, B, right? So R से आएगा, it will come here, then it will go this way, इस स्विच के थ्रू आएगा, then it will come down to motor। ओके, और इतनी वोल्टेज जितनी भी सेकेंडरी में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी वो अप्लाई हो जाएगी हमारी मोटर के अक्रॉस। ओके, सेम केस रहेगा आपका रेस्ट ऑफ द 2 फेजेस के साथ भी। ओके, रेस्ट ऑफ द 2 फेजेस के साथ भी सेम केस आपका रहेगा, ठीक है। सो इनिशियली क्या होता है, हम रिड्यूस्ड वोल्टेज, ये दोनों मेथड हमारे रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग के भी हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, रिड्यूस्ड मेथड, एक्सप्लेन द रिड्यूस्ड मेथड स्टार्टिंग ऑफ योर इंडक्शन मोटर्स। तो रिड्यूस्ड मेथड में आपके 2 मेथड्स आते हैं।
either you say start delta or you say auto transformer. Both methods are reduced starting, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मोटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की है वो रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई की है इनिशियली, राइट। सो इनिशियली हम क्या करेंगे, मोटर के जो हैंडल है उसको स्टार्ट पोजीशन में पुश करेंगे, जिससे क्या होगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज मोटर के क्रॉस अप्लाई होगी और मोटर इनिशियली जो है वो स्पीड पिकअप करेगी, राइट। कम करंट फ्लो करेगा और इनिशियली स्पीड कम पिकअप करेगी। उसके बाद जैसे ही मोटर आपका, अगेन यहाँ पर भी वही केस है, 80% ऑफ द रेटेड स्पीड अगर आपका मोटर जो है वो पिकअप करता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हैंडल को रन पोजीशन में फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही रन पोजीशन पे हम लोग हैंडल को मूव करेंगे, आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सर्किट से आउट हो जाएगा, ठीक है। और फुल वोल्टेज जो है वो मोटर के क्रॉस अप्लाई होगी और मोटर आपका रेटेड स्पीड पे रन करना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो लेट अस सी इट्स ऑपरेशन। दिस फिगर shows the diagram of auto transformer starter, ठीक है। auto transformer is provided with a number of tappings. In practice the starter is connected to one particular tapping to obtain the most suitable starting voltage. यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर टैपिंग को हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ताकि हमें मोस्ट सुटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज मिले। Now a double throw switch S is used to connect the auto transformer in the circuit for starting. When the handle H of the switch S is in the start position, the primary of the auto transformer is connected to the supply line, all right, and the motor is connected to the secondary of the auto transformer, right। मोटर हमारी सेकेंडरी में कनेक्टेड है, जबकि आपकी जो प्राइमरी साइड है वो सारी की सारी आपकी लाइन के साथ कनेक्टेड है, ओके। When the motor picks up the speed about 80% of its rated speed, the handle H is quickly moved to the run position. As the handle is moved to the run position, the auto transformer is disconnected from the circuit and the motor is directly connected to the line, right, and gets its full load rated voltage. Alright, the handle is held in the run position by the under voltage relay, right, and in case the supply fails or falls below a certain value, the handle is released and returns to its off position, right, and overload protection is provided by the thermal overload relay here. Alright, so this was all about your start delta starter and auto transformer starters.